नमस्कार। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग राउंड टेबल हमारे इस वेबिनार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आज मेरा साथ निभा रहे हैं हमारे रिसर्च डेस्क के दीपक साहा। दीपक, गुड आफ्टरनून। एंड यस, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड पीस जिस पर आपने डीप डाइव रिसर्च की है, इस पर बातचीत होने वाली है। एंड दीपक, उम्मीद यही करेंगे कि इस वेबिनार के अंत में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो टेक अवे इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट पीस को लेकर जाएं और अपने निवेश की जो गाड़ी है या निवेश की जो रणनीति है उसमें एक डिसीजन लेने की कोशिश कर पाए। तो चलिए आज के इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और इस वेबिनार की शुरुआत में सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहूंगी कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, किस टॉपिक का और कौन से इन्वेस्टमेंट आइडिया की आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े आइडियाज पर एक एक कर हम वेबिनार करेंगे। आज निवेश की बात होगी और ये निवेश की बात होगी डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड पर। हमारी रिसर्च डेस्क ने डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड पर एक रिसर्च पीस तैयार किया है, एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है और इसी रिसर्च रिपोर्ट को समझाने की कोशिश होगी। सबसे पहले क्विकली आपको बता देती हूँ कि ये वेबिनार जो है अगले 1 घंटे में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या चीजें आप समझेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार क्या कुछ होगा जो आप लेकर यहाँ से जाएंगे। तो सबसे पहले तो डीसीएक्स सिस्टम्स यानी कि हमारे इस रिसर्च पीस के बारे में हम बताएंगे, कंपनी का ओवरव्यू क्या है वो आपके सामने रखेंगे। उसके ठीक बाद बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट स्वीट के बारे में आपको बताएंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, डीसीएक्स सिस्टम्स आखिर करती क्या है और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के क्षेत्र हैं जिसमें ये कार्यरत है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है और तिमाही आधार पर साथ ही सालाना आधार पर कंपनी के नतीजे कैसे रहे, इस पर एक क्रक्स आपके सामने रखेंगे। बिकॉज रिजल्ट्स एक वो चीज है या मैनेजमेंट की कमेंट्री वो चीज है जिससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, विजन को लेकर क्या कुछ मानकर चल रही है, क्या कुछ सोच रही है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात होगी जो कि है इन्वेस्टमेंट रैशनल। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट थीसिस, या यूं कहें कि क्या चीजें हैं जिस वजह से हम कह रहे हैं कि डीसीएक्स सिस्टम्स जैसी कंपनी के ऊपर आपकी एक नजर होनी चाहिए और इस पर रिसर्च किस वजह से हमने तैयार की है। सो इन्वेस्टमेंट के पीछे के रैशनल हम आपके सामने रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस होगा। इसके ठीक बाद मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में एक छोटी सी डिटेल, एक ब्रीफ डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, इवन इन्वेस्टमेंट रैशनल से इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीचर्स क्या है, किस वजह से रिसर्च पीस हमने तैयार किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और साथ ही आउटलुक और वैल्यूएशंस क्या है ये भी तो जानेंगे आप। तभी तो आपको पूरा का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस मिलेगा कि हमारा क्या मानना है, ये रिसर्च के पीछे हमारी फाइनल आउटकम या कह सकते हैं कि फाइनल हमारी फाइंडिंग क्या है और किस वजह से हमने पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट को तैयार किया है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने होंगी। एंड यस, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार 10 से 15 मिनट का Q&A सेशन भी होगा। तो चलिए क्विकली शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं डीसीएक्स सिस्टम्स कंपनी क्या करती है, कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू और उसके बाद एक एक कर प्रोडक्ट स्वीट की तरफ चलेंगे। सो डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड, सबसे पहले तो ये जान लीजिए एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र से ताल्लुक रखती है ये कंपनी। जी हाँ, और पर्टिकुलरली डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड की अगर बात करें, डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करती है किस चीज में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस। ये हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर हार्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, पीसीबी असेंबली, ये सारी की सारी जो फंक्शंस हैं, सारी की सारी जो सिनेरियोज हैं, इस पर सोल्यूशंस प्रदान करती है। कौन सी इंडस्ट्री में? डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में। कंपनी की कोर स्ट्रेंथ है अपने सॉल्यूशंस जनरेशन में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में है, विद अ फोकस ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन पीसीबीएस में, जिस पर खास तौर से हम बात करेंगे, जिसके चलते कंपनी, और ये जो काम है ये कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी रैनियल एडवांस सिस्टम के साथ करती है, जो कि इनकॉर्पोरेट की गई थी 2022 में। इस पर विस्तार से आगे बात भी होगी। इसके अलावा अगर आप देखें, ये केटर करती है बोथ टू कैप्टिव कंजम्पशन एंड एक्सटर्नल मार्केट्स। डीसीएक्स सिस्टम्स की बात करें तो पर्टिकुलरली डिफेंस और एरोस्पेस में तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इसी के चलते इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है नियाट सिस्टम लिमिटेड वाया अ जॉइंट वेंचर। इस जॉइंट वेंचर के जरिए क्या होगा, इस जॉइंट वेंचर में 2 पार्टी शामिल हैं, डीसीएक्स और ईएलटीएस सिस्टम्स, जिसका गठन 2023 को हुआ था। और इसके चलते ये रेलवेज में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने का
या कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सॉल्यूशंस निकालने का काम करेगी। सो क्लियरली एरोस्पेस और डिफेंस में तो है ही। अब ये जो तीनों बातें मैंने कही, इससे सीधा एक आकलन ये लगाया जा सकता है कि डीसीएक्स सिस्टम्स इन पर्टिकुलर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन साथ साथ ही कारोबार विस्तार पर खास तौर से ध्यान रख रही है, और इसी के चलते ये हमारे फोकस रेडार पर है। हमारे इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की सबसे बड़ी लाइन या यूं कहें यूएसपी डीसीएक्स सिस्टम्स के लिए ये है कि द शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इंटीग्रेशन टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मेक्स डीसीएक्स अपीलिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मेक इन इंडिया। आप जानते ही हैं कि सरकार ने पिछले सालों में मेक इन इंडिया या ये कहें कि खास तौर से स्वदेशीकरण पर कितना ज्यादा महत्व दिया है, और डोमेस्टिक कह सकते प्रोडक्शन पर, बी इट इन द स्पेस ऑफ डिफेंस, किस हद तक सरकार ने मोटिवेशन दिया है टुवर्ड्स द इंडियन कंपनीज। सो क्लियरली सोल्यूशन ओरिएंटेड, और अब साथ में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस है कंपनी का। तो ये कंपनी को एक बहुत बड़ा बास्केट बनाती है, पर्टिकुलरली इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। कंपनियां या तो एक या दो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इस स्पेस में जितने भी सोल्यूशंस, और सिर्फ जितने भी सोल्यूशंस है वही नहीं, नए सोल्यूशंस भी वाया, जैसे कि मैंने नियाट सिस्टम्स लिमिटेड की बात की, नए सोल्यूशंस या नए प्रॉब्लम्स को डिफाइन करके उसके बाद उसमें सोल्यूशंस क्या निकल कर आ सकते हैं, उस पर भी काम कर रही है। तो क्लियरली कंपनी कारोबार विस्तार पर फोकस करी। ऑर्डर बुक बड़ी है, और आपको बताएंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में कि कंपनी को ताजा ऑर्डर भी मिला है, जो कि काफी बड़ा है। चलिए क्विकली अब ओवरव्यू कंपनी का। कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? इनकॉर्पोरेशन 2011 में हुआ था, जब इनका नाम डीसीएक्स केबल असेंबलीज प्राइवेट लिमिटेड था, जो कि बाद में बदलकर डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड 2022 में हो गया। बिजनेस वर्टिकल्स की अगर बात करें, कंपनी 5 की सेगमेंट्स में काम करती है: सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर हार्नेसिंग, किटिंग, एमआरओ एंड ईएमएस। सिस्टम इंटीग्रेशन जो है वो डोमिनेट करता है कंपनी के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो सिस्टम इंटीग्रेशन की तरफ से आता हुआ दिखता है। क्लाइंटल और कस्टमर एंगेजमेंट की अगर बात करें, ढेर सारी कंपनियां हैं, सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी कंपनी ने अपनी पकड़, या कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ जमाई है यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया और साथ ही भारत में भी, और क्लाइंटल बेस जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, आईएआई, रफाल जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एज ऑफ सितंबर 30, 2023 डीसीएक्स ने अपने इक्विपमेंट प्रोवाइडेड या यूं कहें कि अपने कस्टमर्स को जो सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, उसे अगर आप क्वांटिफाई करना चाहें तो 300 करोड़ जितना यहाँ पर देखने को मिला है। सो ये कुछ आंकड़े हैं। कमर्शियल फैसिलिटीज और एक्सपेंशन की अगर बात करें, कंपनी की फैसिलिटीज जो है बेंगलुरु में स्थित है, कमीशन की गई थी 2020 में। नई फैसिलिटीज भी जो है, जो कि कमेंस की है कंपनी ने सितंबर 2023 में, और लगातार बिजनेस एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए जिन जिन फैसिलिटीज की जरूरत है वो कंपनी एक के बाद एक करती जा रही है। कमिंग राइट टू द पर्सन जिसने ये सारी की सारी रिसर्च, या कह सकते कि जिसने इस रिसर्च में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मिडनाइट ऑयल खर्च किया है और बहुत मेहनत की है। दीपक, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह की रैशनल रहे और क्या कुछ रहा जिसके चलते ये कंपनी, बिकॉज एरोस्पेस और डिफेंस इन पर्टिकुलरली अगर डिफेंस स्पेस को देखें, कई सारी कंपनियां थी जो कि फोकस में थी, बट वाई डीसीएक्स सिस्टम्स? और आपकी तरफ से अब हम प्रोडक्ट स्विट जानना चाहेंगे, बिजनेस मॉडल भी समझना चाहेंगे। थैंक यू मानसी, एंड थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। आपने मतलब बहुत ही यू गिव अ very spot on brief about the company, Mansi. So taking cues from there, just to give you a small track of DCX, we released the report on DCX systems in the month of February on multiple factors that we'll discuss going ahead. And our target was around 519, and we released the report at 350. And the stock has run up from there quite decently, another 26% it has run up. And right now, as you said, that they have received certain orders, which is very big in terms of where they are currently and what they are targeting. So these are the kind of small track that has happened with DCX so far. Talk about specifically about the products that DCX is into. You already alluded to a lot of things that they are already doing, like system integration, cable and wire harnessing. I'll just break down each of these in a simple manner for the viewers to understand a little bit in a comprehensive way. So if you see, जो DCX systems का, as you said, 90% or majority of the revenue is coming from system integration. To understand what system integration is, basically, if you see in defense companies,
you need multiple subsystems for a master system to operate. For example, you have missile system, you have communication system, right? You have radar. All these are at the end of the day composed with multiple subsystems, which are called kind of box building, right? So DCX system is into that subsystem integration or box building, which eventually led the final product to function flawless, right? So excuse me. So if you see DCX in terms of system integration, which generates large part of the revenue, it has missile, then you have electronic and electromechanical assembly, communication system, missile systems, radar systems. Lot of these systems that needs to be assembled or integrated with the larger system. That is what DCX system does. Now in system integration, you need lot of other things. Say cable and wire harnessing you need, which is basically fitting of the very precise kind of cable harnessing that DCX needs to do. That is also done by DCX. At the same time, DCX is into MRO, that is maintenance, repair, and overhauling. So that is also a very big opportunity ahead. We'll discuss about that in the investment rational part. But system integration, cable and wire harnessing, and most importantly, as you said, they have created one subsidiary, that is Raniel Advanced System, that is for EMS. It's a very heated segment right now, electronic manufacturing services. And with this electronic manufacturing services, DCX does PCBA, that is printed circuit board assembly. Just let me take a minute on this, on PCBA, and why it is important, and why this particular integration with Raniel Advanced System as a subsidiary has taken place. If you see in system integration, if you're doing $100 worth of system integration, $80 to $70 you need PCBA, which was earlier being outsourced by DCX. And they understood that a lot of cost is going and it is being outsourced. And there's a possibility if they build it up in-house, they can save a lot of cost. And that is when the IPO came and the company raised certain amount of money to form this particular subsidiary so that they can do that majority of that system integration, which is PCBA in-house. And that Raniel Advanced System helped them to form this or initiate on this, PCBA, which they have started doing already. So if you see last year, FY24, last 6 months only, out of 1,240 crore of revenue, 1,400 crore odd revenue, they have done nearly 240 crore odd only in PCBA for captive consumption. So that is where Raniel Advanced System has come in. And it is right now only at the captive side. Matlab they are consuming in-house in order to produce system integration. But going ahead, there are two moving parts in EMS. That is, one is captive consumption for system integration. Another one is to do it for commercial purpose. So right now, EMS as a percentage of the overall revenue in FY24 was zero. Because they were internally consuming it. Now they are going to commercialize it, and over a period of say let's 2 years, coming 2 years, that would go up significantly. Like 10 to 12% it can go. And the beauty is it would add a lot to the margin. We'll come to that part. The last part of the product is MRO, maintenance, repair, and overhaul. We have seen, as you said, on the indigenization part by the government. Government is putting a lot of effort to let the foreign OEMs to manufacture defense in India, tying up with Indian partners, right? That is where all the products that have been that were manufactured in last 10 years, they require massive overhaul, maintenance, and repair. Recently, one of the big companies from Israel, like Rafael and IAI Systems, they have set up new plant in Gurgaon just to cater to this maintenance, repair, and overhaul segment, right? And DCX has good amount of experience and exposure in MRO, and they have recently also signed an agreement with IAI in order to cater to this huge market on the MRO side, right? So these are the largely over the top view of the products that DCX is available into. Just to sum up, system integration, which is composition of multiple subsystems or box building into a larger one, which contributes to the larger majority of the revenue for DCX. Second, cable and wire harnessing, which is a high margin accretive business, and the company is targeting to expand their book or the overall revenue contribution to the cable and wire harnessing segment. EMS we discussed in detail, that is PCBA, which would also get commercialized starting FY25 and FY26 onwards. And the last is MRO, right? So this is the largely defense part.
On the railway side, we'll discuss in detail, but just to give it a view, as you said, they have set up, they have acquired they have set up a JV with NIAT Systems, right? That is called NIAT. NIAT is the JV that has been formed with ELTA Systems. Recently, they did a QIP in January 2024. They raised around 500 crore. Out of that, 200 crore would go towards this particular JV. That is for railway. As you said, railway obstacle equipment detection system. So that is basically आजकल हमें पता है कि कितने सारे accidents are happening on the railway side, right? So this particular system would help them in or help the locomotive pilot to understand or identify if there is an obstacle ahead of the track in the range of 1.4 kilometer. And this is a kind of a product which is already approved by the regularized authorities and the railway segment. All they are ready for, the D6 is completely ready for mass production. All they are waiting is formal PO, purchase order, to flow in from the government. So this is a kind of over the top view of all the product segments that D6 is available. एब्सोल्युटली दीपक, आपने सागर को गागर में भरने वाला काम किया है, बिकॉज इनके प्रोडक्ट स्वीट इतने सारे हैं. एंड लाइक यू राइटली सेड, जब हम हमारे व्यूअर्स के लिए इन पर्टिकुलर मैं कहना चाहूंगी कि जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे, हम आपको एक्चुअली बताएंगे कि जब हमने कंपैरिजन किया इस सेक्टर में बाकी सारी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, और फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, लिटरली जैसे कि AMS, MRO, केबल एंड वायर हार्नेस, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट स्वीट है. आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आपको ये बता सकते हो कि इन कंपैरिजन दूसरी कंपनियों के सामने D6 सिस्टम के पास ये सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. और जैसे कि मैंने कहा, या तो कोई कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, बट अगर कंपनी सब कुछ कर रही है और उसके बाद भी एडवांसमेंट लगातार किए जा रही है, जस्ट लाइक द नियाट सिस्टम जिसकी हम आप बात कर रहे हैं, और ये क्या है आपको बताएंगे, तो ये कंपनी जो है एक 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाती है. और ऐसी ही कुछ चीजें हमने पाई जब हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की. एंड क्लियरली जब आप दीपक बता रहे थे, इनफैक्ट नियार्ड सिस्टम की अगर बात करें या फिर इनके करंट रैनियल एडवांस सिस्टम की बात करें, 40 करोड़ के जो आप कैप्टिव कंजम्पशन की बात कर रहे थे, एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन में भी इसने काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया है. सो अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, कि टेक अवेज मैनेजमेंट कॉल से हमने क्या गैदर किए, और क्यों एक तरह से तिमाही आधार पर या सालाना आधार पर कंपनी के फाइनेंशियल्स जब देखते हैं, तो इसे किस तरह से हमें समझना चाहिए. क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है, कंपनी काफी हद तक नए एग्जीक्यूशंस और नए शिफ्ट कर रही है, और जब हम नए एग्जीक्यूशन, नए शिफ्ट और नई डिस्कवरीज करते हैं, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी इन दी बुक्स भी नजर आ सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होती है. इसके सामने हमें ये देखना चाहिए कि ऑर्डर विंस क्या है, कंपनी की एक्सपेंशन कैपेसिटी क्या है, और कंपनी का विजन क्या है, जिसके चलते वो इतना बड़ा रिस्क भी ले रही है कि वॉलेटिलिटी कुछ हद तक आगे पीछे देखने को मिले. सो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये सबसे बड़ी चीज है जो कि समझनी होगी. फाइनेंशियल्स को जब हम ध्यान में रख रहे हैं, उससे भी पहले इस पॉइंट को जानना होगा. ऑर्डर विंस काफी अच्छे हैं, और ताजा ऑर्डर विंस भी होते हुए दिखे हैं. कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर ताजा मिला है L&T की तरफ से, और इसी के चलते कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे, लिटरली अगर आप देखेंगे सालाना आधार पर, साल दर साल ऑर्डर बुक में लगातार वृद्धि या बढ़ोतरी ही होती हुई देखने को मिली है. मार्की क्लाइंट है कंपनी के पास, और ये क्लाइंट यूएस एरोस्पेस से, या कह सकते हैं सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी कई सारे क्लाइंटल की बुक हैं बड़ी, जो कि कंपनी के सामने आती हुई देखने को मिली है. मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इन डिलीवरिंग अ प्रॉपर ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस आने वाले दिनों में. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेंशंस जो कंपनी लगातार किए जा रही है, कई सारी नई चीजें हैं जिस पर कंपनी फोकस कर रही है. लेकिन इसके अलावा, जैसे कि मैंने कहा, कंपनी ने मार्की क्लाइंट्स ऐड किए हैं. टू नेम अ फ्यू, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, जो कि $103 बिलियन की यूएस कंपनी है, ऐड की है कंपनी ने अपने बुक्स में. स्पेशलाइज्ड है ये कंपनी ग्लोबल सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस में, एंड ऑफ कोर्स कंपनी ने कई सारे ऑर्डर्स भी इसी के चलते देखे हैं. और ये काफी हद तक DCX को मदद करेगा आने वाले दिनों में इन ऑर्डर टू गेन विजिबिलिटी इन द इंडस्ट्री. क्योंकि जब मार्की क्लाइंट्स की एंट्री होती है आपके बिजनेस में, या एडिशन होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके बिजनेस और आपके ब्रांड का जो वजन है वो बढ़ जाता है. इसके अलावा कंपनी के ऑर्डर्स की अगर बात करो, आए दिन हमने सुना है, पिछली बार भी हमने इनफैक्ट ताजा खबर थी कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल प्लेयर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज, और ये कई सारी ज्योग्राफी से ऑर्डर मिल रहे हैं.
इस पर दीपक से एक बार जानना भी चाहेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले रैनियल एडवांस सिस्टम की अगर बात करें, वहां पर एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन में काफी हद तक कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम के चलते मिला है। डी6 सिस्टम ने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 209 करोड़ इन नियाट सिस्टम, और नियाट सिस्टम जो है वो हाई ह्यूज डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी रेलवे सेगमेंट में लेकर आ सकती है। और रेलवेज की अगर बात करें, रेलवे इंफ्रा जो है इज अनदर सेट ऑल टुगेदर, जिस पर एक अलग वेबिनार हो सकता है, इस पर कंपनी का फोकस है। So not only aerospace and defense, this is another space जहां पर नियाट सिस्टम के जरिए कंपनी फोकस कर रही है। D6 सिस्टम वुड आल्सो बी ए सप्लायर फॉर द की मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, कई सारे जॉइंट वेंचर्स की जैसे कि हम बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स लगातार सालाना आधार पर अगर देखें, एक नहीं तो दूसरे पहलुओं के चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लगातार होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की दीपक। ताजा ऑर्डर एलएनटी की तरफ से कंपनी को मिला है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अगेन अ बिग वन, क्योंकि ऑर्डर बुक्स की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन इज वन ऑफ द यूएसपी फॉर डी6। और अब एक और नया ऑर्डर। Yeah, Mansi. So, see, I mean, on the order book side, just to give it a perspective, put some perspective into it for the viewers, the recent order that they received around 1250 crore. This is highest ever PO the company has ever received in the history of its timeline. Right, and that too from L&T, which is a very prominent player in defense and in multiple other segments, as we all know. But the point here is, last year, I mean, if you see Q4 FY24, at that point of time, they had an order book of 800 crore. Now they have received this 1250 odd crore order from L&T, that is, module that is electronic module category B within system integration that they would be doing. And with L&T, as this order has come up, the concerns around the order book has evaporated now. So, and another important point is, it is one of the many order book that are in the pipeline. Now, one single order has come from 1250 crore from L&T. You also highlighted they have received, quality order from Lockheed Martin, which is one of the prominent player at international defense, right? And going ahead, there are a lot of order pending in the pipeline from cable and wire harness segment. So two things would happen because of these orders. Earlier, all the orders D6 systems have executed, they did not have Raniel Advanced System, which is their backward integration subsidiary, right? That is within EMS that they are available, right? Now, if you see with the integration of Raniel Advanced System, they would be able to save a lot of cost. That would help in expanding the margin on the new orders as well, because PCBA is well, up and running. On the other side, cable and wire harness is a segment where the company generates only 20 to 22% EBITDA margin, right? Where last year, if you see FY24, last quarter went, little bit during the last quarter, there was certain postponement of margin because of increase in certain component prices, which would ultimately flow in. So from that point of view, adjusted EBITDA margin should be looked at 7%, though the reported was at nearly, around 5.5% odd, but the margin was adjusted basis. If the 25 crore additional number flows in, 20 to 25 crore, that should give a additional margin around 7%. Now, with that is without having Raniel Advanced System for the full year, which would be the case in FY25. You would have Raniel Advanced System, which would be driving your margin on the higher side. Secondly, if you see FY24 on cable and wire harnessing, it's very small, right? That was around 2.5 to 3%. For the entire year, out of 1,450 crore top line, 40 to 45 crore was cable and wire harness segment. And guess what? If this year, recently, they have received one single PO of 30 crore in cable and wire harness segment, which was 40 to 45 crore entire year revenue in cable and wire harness segment last year. And there are many more such order pipeline in cable and wire harness segment. In the recent commentary the management has laid out, they have categorically mentioned that their focus is on the cable and wire harness segment, and they want to secure much more order there. And also they have set up a new line, additional line for optic cables. Okay, earlier they were only into cable and wire harnessing segment. Now they have set up another line for optic cables, which would further expand their portfolio within cable and wire harness segment, right? So these are the certain critical parts of the order book.
Coming to another important point of the order book, as I said, this 1250 plus 800 crore, that is 2000 crore order book as of right now. But even if you consider Q1 run rate, the numbers would come in a month time because Q1 is done. The momentum for the business in first half is moderate. So the business would pick up in second half. So even after adjusting Q1 revenue, they should have around 1800 crore odd, order book with them, lying with them. And the other order books that are in, pending or in the order, or the order pipeline is also quite robust. That should also aid to the overall revenue going ahead. Now, because of this order book in FY25 and FY26, we are expecting around 20% odd revenue CAGR for the coming 2 years. On YOY basis, FY25, there should be at least 30 to 35% growth on the top line, and the kind of commentary also that has come in from the management. And because of this, the operating leverage would come into the picture. Raniel advanced system is there, which would also help in expanding the margin. And most importantly, you'd have cable and wire harness segment that should at least, grow multifold this particular year compared to what has gone or what has been executed last year. And imagine all of these does not include your NIAT, that is a railway part, right? So railway is not yet baked in. In all these numbers, railway is not baked in. Once that comes in, that takes the company to a different, trajectory. So this is where the order book stands and the opportunity stands on the railway side. Yes, so Deepak, taking it right from there, when you say when the railways or the NIAT system bakes in, the numbers would be different altogether. So I think फिर हमें investment rationale से ही आगे बढ़ना चाहिए, because Raniol Advanced System और NIAT system की बात हम लगातार कर रहे हैं. अब exactly ये हमारे investment rationale का भी हिस्सा है, तो इस पर भी विस्तार से बातचीत करनी होगी. लेकिन even before that, मैं अपने viewers को कहना चाहूंगी, Q&A window खुल चुका है और इस वेबिनार के अंत में 10 से 15 मिनट आपके सवालों के लिए जगह होगी, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. सो Q&A सेक्शन में आप अपने सवाल जो भी हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए, एंड वी विल ट्राई कि हम हर सवाल का जवाब आपको दे पाएं. अब आगे बढ़ते हैं और सीधा इन्वेस्टमेंट रैशनल, यानी कि क्या वजहें रही जिसके चलते हम DCX सिस्टम जैसी कंपनी पर रिसर्च कर पाए, और इस रिसर्च में क्या कुछ निकल कर आया, और क्या चीजें हैं जिसके चलते निवेश को मद्देनजर रखते हुए DCX सिस्टम जैसी कंपनी पर हमारी नजर होनी चाहिए. इस पर बातचीत करते हैं. इन्वेस्टमेंट रैशनल के सारे पॉइंट्स एक एक कर आपके सामने रखेंगे, और शुरुआत सबसे पहले नियाट सिस्टम से ही करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि अभी दीपक ने कहा, नियाट सिस्टम जो है इज अ सिस्टम विच इज बीइंग डेवलप्ड, और जब ये पूरी तरह से बेक होगा या जब ये पूरी तरह से कुक होगा, तब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं या कंपनी के जो कह सकते हैं कि कंपनी का प्रदर्शन है, उसमें अलग ही तरीके का एक आप स्टेज देखेंगे, अलग ही फेज देखेंगे. बिकॉज ये नियाट सिस्टम जो है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है, एरोस्पेस डिफेंस से जुड़ी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन कंपनी जो है हाई ग्रोथ सेक्टर सच एज रेलवे सेक्टर में कर रही है थ्रू नियाट सिस्टम लिमिटेड. क्या है ये सिस्टम, क्या है ये नई पहल, इस पर अब बातचीत करते हैं. तो DCX सिस्टम ने एंट्री की है वाया अ स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर. ये एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है ELTS सिस्टम्स के साथ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नियाट सिस्टम. सो इस जॉइंट वेंचर के तहत नियाट सिस्टम का गठन किया गया है, और DCX इसमें मेजॉरिटी ओनरशिप स्टेक रखती है. नियाट सिस्टम का प्राइमरी फोकस है डेवलपमेंट करना, किसका, एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का, लेकिन किसके लिए, रेलवे के लिए इन पर्टिकुलर. ये नियाट सिस्टम जो है वो डेवलप की गई है और जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप की गई है. ELTA जो है वो पायनियर है एज एन इनोवेटिव रेडार एंड ऑप्टिकल बेस्ड सोल्यूशन फॉर डिटेक्टिंग ऑब्स्टिकल्स ऑन रेलवे ट्रैक्स. सिग्निफिकेंटली रिस्क जो कि एक्सीडेंट्स के टाइम पे होते हैं, इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इस सिस्टम का गठन किया जाएगा. अब भारत देश में अगर हम देखें रेलवे सेक्टर को पर्टिकुलरली समझने की अगर कोशिश करें, एक्सटेंसिव बजट है एंड ओवर 14,000 लोकोमोटिव इन ऑपरेशन, जो एग्जिबिट करता है हाई डिमांड इस तरह की एडवांस सिस्टम के लिए. रेलवेज भारत की जान है, ये तो हम जानते ही हैं, और इस जान में जो भी सिस्टम्स के डेवलपमेंट है, जो भी सिस्टम्स में ग्लिचेस हैं, उन ग्लिचेस को ठीक करने के लिए
अगर किसी तरह की सिस्टम बन रही है तो ऑफ कोर्स ये काफी हद तक अहमियत रखती ही है। डेडिकेटेड बजट एलोकेशन 34,000 करोड़ का फॉर रेलवे टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स जो कि सरकार की तरफ से आया है। द इंडियन रेलवे इज अंडरगोइंग अ पिवटल शिफ्ट। ऑफ कोर्स रेलवेज तब और रेलवेज अब में काफी फर्क हम देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी रेलवे सेक्टर में जो फर्क दिखना है उसके लिए इस तरह के सिस्टम्स की काफी जरूरत है। और इसी के चलते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स की अगर बात करें, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और नियाट सिस्टम के जरिए डीसीएक्स ने ये जाना है, या इस जॉइंट वेंचर के जरिए डीसीएक्स ने कह सकते हैं कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हासिल कर लिया है इस तरह की टेक्नोलॉजी लाकर। एडिशनली रेलवे इंडस्ट्री प्रेजेंट करती है पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिटेबल मार्जिन्स एंटिसिपेटेड टू बी इन द लो एंड मिड टीन्स परसेंटेज रेंज। डीसीएक्स सिस्टम्स जो हैं वो पॉइज्ड हैं टू बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एंड ऑफ कोर्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली रिक्वायरमेंट्स, जो कि नियाट सिस्टम्स के जरिए कंपनी क्लियरली इस टेक्निक के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इसके अलावा दीपक आपसे भी जानना चाहेंगे कि बिकॉज नियाट सिस्टम पर और खासतौर से पीसीबीए पर और उसके साथ साथ एक्सपेंशन जो कि एमएस में रैनियल एडवांस सिस्टम के जरिए करने जा रही है, ये क्यों सबसे बड़ा हिस्सा रहा जब आप अपने रैशनल्स को कोट कर रहे थे या रैशनल्स को बनाने की कोशिश, या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट थीसिस को लिखने की कोशिश कर रहे थे? व्हाई इज रैनियल एडवांस सिस्टम एंड नियाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं कि इस रैशनल में सबसे पहले 2 पॉइंट्स? Sure, Mansi. You covered good amount of ground on these two aspects. I'll come to that. But before that, there are two questions. I think Mr. Anup is asking about the debtor days and promoter holding coming down in the latest quarter. So, sir, two things. If you see the last quarter, DCX delivered 700 crore worth of top line, 746 crore around top line, which was a significant jump for that particular quarter. And that has led to certain increase in debtor days. But the positive part is they got certain, the credit facilities as also at that point of time, which adjusted the overall working capital days or the cash conversion cycle. So that is because of that last quarter for DCX is always heavy, right? So it's a very, good observation from your side, your side, the kind of working capital that has debtor days, not the working capital is remaining same, but debtor days has increased because last quarter number was quite high, 700 crore. And the reason you have seen 9.44% decline, the number you have said, it's not the promoter has gone and sold. Recently, what has happened in the month of January, as I told, they did a QIP, right? And because of which a lot of institutions have also come into the picture. And they did that QIP for this JV of NIAT, right? They raised 500 crore. I'll come to that part. That has led to certain dilution. And during that time, they said it was already communicated that there would be certain, selling from the promoter side. I think they said that time that could not materialize, that promoter stake sell, but that happened recently in a block deal. But I think total the promoter actually stake sale from Raghavendra Rao, the CEO, has somewhere around 1.3 or 1.4%, and the NCBG holding, which is the other promoter holding company, that has sold around some percentages there, but it's not significant. But large part of the dilution has happened because of the QIP money that the company has raised. And there is another question on the target price. I think we can take that at the end because there's still a good amount of steam left in the stock, and I'll talk about what are the re-rating possibilities that can drive the prices higher depending upon the developments that take place. But to answer your to take your point forward, Mansi, on the NIAT and Ranial advanced system. See, let's understand one thing upfront. Any electronic product you make, be it defense, and especially in defense, right? You need three things. You need system integration, you need PCBA, you need cable and wire harnessing. If you see the current operations of DCX with the help of Ranial, they are doing PCBA in-house as well as commercial operations they are going to start. Just to give you a glimpse, there are other EMS players who are also doing PCBA, but those are low value PCBA. One particular PCBA in defense for DCX, right, values around 25 to 30 lakh. Okay, and as I said, in Q3, over a period of just 60 days, right? They did not utilize even the 90 days, but even if you normalize it, over a period of 90 days, they did
40 crore, captive consumption for PCBA. That is somewhere around, 140 around kind of number of PCBAs that they made in terms of unit. So the point is they are doing high value complex PCBAs, and the volume is kind of on the lower side. So that is where PCBA is a ultimate, very basic requirement, critical requirement in any kind of electronic products and defense as well. Cable and wire harnessing is equally a very important segment, and system integration is also required. All these inbuilt capabilities that they have developed over the years going to be used in order to manufacture the obstacle detection equipment that would come out of the NIAD JV. So the benefit is all the other outsourcing requirement for manufacturing this railway product, they can utilize their in-house capabilities on the system integration side, on the PCBA side, as well as cable and wire harnessing side. So also to link this particular thing with the one of the questions being asked, as I said, 500 crore was raised for this particular JV. Only 200 crore was spent for this JV in order to do transfer of technology from ELTA, which is the pioneer of this particular technology. And it is not only domestic opportunity, export opportunity is there. There's another 200 crore money kept aside to form a JV directly with DPSUs or other OEMs, which would enable DCX Systems to directly go ahead and operate as a non-IOP partner, right? Which they're already operating as non-IOP partner, that is a non-Indian offset partner. We'll come to that part a little bit later, but that would help DCX to directly, help work with the DPSUs, domestic public sector, defense public sector undertakings. So that money is already kept aside, and that JV with some of the DPSUs or OEMs will enable DCX to manufacture certain products on their own in defense, right? And that would help them to also move beyond system integration, which they're already doing. And that particular JV is also in advanced talks. And in one of the last quarterly con calls, we understood in the coming con call or in the coming quarter, we'd have more update on that upcoming JV on the defense side, because the other JV is already done. So this is where the synergy between RANIAL advanced system and the internal capabilities developed by DCX over the years with the NIAT, that is a railway JV between DCX and ELTA Systems, right? That is an Israel-based company. And if you see, it is not only the domestic opportunity, the same kind of product equipments on the railway side would be used or exported. That is what is also the target for the management, as they have alluded many a times. So, but one thing I think on the railway side, let some of the POs come in, because the company is ready for mass production, but we need to wait for certain POs, because that is why we have also not included that any possible revenue in our model. That is solely on the defense side. Whatever we have baked in our model is on the defense side. So I think as and when those kind of POs come, that would add further, energy to the business, and that would drive much more different dynamics into the business operations once that particular thing starts coming in. You're right there, and in fact डिफेंस में जो जॉइंट वेंचर्स है उसका जिक्र भी करेंगे, बिकॉज वो भी हमारे रैशनल का हिस्सा है. लेकिन जैसे कि हमने इन सिस्टम्स की बात की, चाहे रैनियल हो या नियाट सिस्टम हो, कई सारे एडवांस सिस्टम्स पर कंपनी काम कर रही है. जब आप सिस्टम्स पर या तकनीकों पर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके बिजनेस को काफी हद तक देखा जाता है. और इसी के चलते कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट रैशनल है वो क्रिएट होता है, और वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ ही अपॉर्चुनिटी केबल और वायर हार्नेस में. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह के ट्रांसफर अग्रीमेंट्स पिछले दिनों में हुए हैं, और किस तरह से अग्रीमेंट्स हमें एक तरह के संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र जो है वो कितना बड़ा हो सकता है. देखिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लैंडस्केप जो है, पर्टिकुलरली हार्डवेयर कंपोनेंट सेक्टर का, ये रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, और ये काफी हद तक अपॉर्चुनिटी है डीसीएक्स जैसी कंपनियों के लिए. ग्रोथ जो है वो ड्रिवन है काफी हद तक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट से, ऑफ कोर्स बोथ नेशनली और ग्लोबली. नोटेबल फोकस कनेक्टर्स पर, केबल्स पर है, विच इज यूज्ड इन वेरियस टर्नकी एंड सब सिस्टम असेंबलीज. अब ये सारी
कह सकते हैं कि टेक्निकल हैं चीजें, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो काफी हद तक डिमांड में है, और इसी के चलते आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है, इसकी बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो रही है, और इसी के चलते कई सारे अग्रीमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। ये अग्रीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ डिमांड को एनहांस केबल और कनेक्टर्स के लिए नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी सब्सटैंशियल बेनिफिट्स हैं जो कि डिफेंस ऑफसेट्स में पाए जाएंगे, जिसका अभी जिक्र दीपक ने भी किया। कॉन्सिक्वेंटली अगर आप देखें केबल और वायर हार्नेसिंग में भी हम देख रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू सी अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द कमिंग ईयर्स। अभी भी ग्रोथ दिख रहा है और आने वाले सालों में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये ड्राइव करेगा डीसीएक्स के मार्जिन को पर्टिकुलरली, और इसी के चलते डीसीएक्स फोकस कर रही है एक्सपेंशन में रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली फॉर केबल एंड वायर हार्नेस सेगमेंट। अब अगर कुछ आंकड़ों को देख लें, फॉर इंडिया ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट जो है वो काफी पिवटल है। 2019 की ही बात कर लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कह सकते हैं मार्क किया था बाय साइनिंग 30, जी हाँ 30 अग्रीमेंट विद 16 इंडियन कंपनीज एट द ग्लोबल वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये अग्रीमेंट्स जो है वो पाइवटल या पिवटल शिफ्ट साबित हो सकते हैं इन डिफेंस और एरोस्पेस जैसी कंपनियों के लिए, और ये सर्ज जो है इन नेशनल कोलैबोरेटिव अग्रीमेंट, ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में सब्सटैंशियल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, वो कहते हैं ना कि जो स्वदेशीकरण है उसका, उसे एक हद तक सरकार ने काफी हद तक महत्व भी दिया, और इसी के चलते इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो है वो लगातार बढ़ती गई है, और वो बढ़ती कैपेबिलिटीज के चलते हम इतने सारे अग्रीमेंट्स और इतने सारे टाइप्स भी देखते हैं, जैसे कि वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो में। खास तौर से मेरा ये कहना है, आप एक बार जरूर सर्च कीजिएगा, वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो जो था वो एक बड़ा उदाहरण है किस तरह से इंडिया या इंडियन कंपनीज के लिए हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को कितना बड़ा तवज्जो मिला था। सो क्लियरली ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेट किए गए हैं, और ये एग्जाम्पल्स जो है सीधे तौर पर संकेत बताते हैं, संकेत देते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर है जिस पर खास तौर से फोकस है। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम्स 2020 में इंट्रोड्यूस भी किए थे। फर्दर ये भी अगेन इट अंडरस्कोर्स की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो काफी हद तक बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, एम टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट्स, दोनों कंजम्पशन और साथ ही एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स के लिए। एक और चीज, डीसीएक्स के लिए ये जो डेवलपमेंट्स है ये वास्ट अपॉर्चुनिटी है, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होते हुए दिख रहा है। कंपनी लेवरेज कर सकती है इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट्स को इन ऑर्डर टू टैप द ग्रोइंग डिमांड इन द हार्डवेयर कंपोनेंट सेक्टर। देखिए, जो जिस सेक्टर से ये कंपनी ताल्लुक रखती है उसकी डिमांड तो है, लेकिन इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट से आगे इस डिमांड को और ज्यादा टैप करने में भी मदद मिलेगी। सो ये अलाइनमेंट जो है काफी अच्छा साबित हो रहा है। कंपनी नए सिस्टम्स के साथ नए इन्वेंशंस तो कर रही है, लेकिन साथ साथ ये इन्वेंशंस जो है वो एक तरह से फ्रूटफुल भी साबित हो रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कई सारे अग्रीमेंट्स, कई सारे टाइप्स और कई सारे डिमांड बेस्ड अप्रोचेस इन सारे के सारे इन्वेंशंस को मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कमिंग नेक्स्ट टू द जॉइंट वेंचर, ऑफ कोर्स डिफेंस में जॉइंट वेंचर्स की बात है, इसका जिक्र आपने हल्के से किया दीपक, लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉइंट वेंचर्स डू वी सी इन डिफेंस, और ये जो सारे के सारे एडवांसमेंट्स हैं वो डीसीएक्स के लिए कैसे नजर आ रहे हैं? Yeah, to highlight on this point, we need to understand the current structure, that is IOP and non-IOP, that is Indian offset partner and non-offset partner. So if just to give it a quick view, see what happens in India, the order comes from, defense ministry or certain players like BHEL or, other XYZ companies, BEL, right? They give that order, and those companies are are responsible, those companies are responsible to execute those orders. Now they give to other OEMs, say foreign OEMs, right, which are based out of Israel, XYZ countries. Now in offset obligation, the policy that is set by the government is, if any of the foreign original equipment manufacturers are getting the orders from India in defense, they have to give back certain amount of business to India, right? That is where DCX Systems operates as an Indian offset partner, like many other companies, like Cyient Limited, Astro Microwave, many other companies are there. Cyient DLM Limited, sorry. So now all these orders were earlier coming, many of the order was earlier coming from this foreign OEMs, right? They were tying up with. Now DCX
could operate with this IOP partners, and whatever they could do in non-IOP segment out of their own abilities and the capabilities that they have built, they were doing. But largely still they were in Indian offset player. Now the logic behind this JV is, if they form a JV, say through transfer of technology, any particular order that is coming out of Defense Ministry for any particular new product or existing product, if they have that technology, they will no longer be like build to print. What I said earlier was, they are right now a build to print company. To define build to print, it's simple terms. There is an OEM, they have already figured out that particular process, you have taken approval, you have the similar process, and you can manufacture that particular thing. So once they form that JV, they would be able to, go ahead and bid for those orders at a competitive rate on their own, because of the transfer of technology, right? And at the same time, they would be able to, have their own particular processes that should execute, that should align well with the requirement of the customer, or say Defense Ministry, or the different defense players. And that should, most importantly, when you are doing direct JV with DPSUs or OEMs, right, you enjoy higher margin, because in offset segment, in offset play, your margins are a bit lower, right? And that is also the reason throughout last many years they have gone through certain lower margin. Now yes, PCBA is coming, then backward integration is happening, cable and wire harness is growing. These things are helping the company in expanding the margin. But if they have this particular JV, which is in advanced talks, right, that should further help them in grabbing much more higher number of POs in defense, and they need not rely on the other OEMs, right? So that would enable them in multiple folds to gain much more market share or order book in the non-IOP segment also, which is the non-Indian offset player. And just to give you a number, even Indian offset segment is quite a big market. If you see, as of today, there is 12 billion to 13 billion dollar of Indian offset obligation that is pending and has to be executed in 7 years in defense. Within that, if you see, 4 to 5 billion, right, is only for defense electronic products. And any electronic product you make, you need system integration, you need cable and wire harnessing, you need PCBA. These are the three major components that you need, and DCX has all three. Recently, if you see, IAI, India Services Limited, that has come into India, right? They have signed an agreement with DCX, because they earlier DCX has served into multiple, long range surface to air missile systems and low medium range surface to air missile systems, which all of these things require huge revamp, or overall, rather than saying revamp, overall maintenance and repair. That is where the MRO part is, right? There is also significant opportunity on the business side. So to give this number, on the offset obligation side, this 12 to 13 billion dollar, out of which 4 to 5 billion dollar is solely for electronics, and DCX is targeting that segment. Even if they get 10 to 20%, it's a huge market from currently where they are at, right? On the other side, if you see, Defense Ministry has released fifth positive indigenization list, which itself is 1,40,000 worth of POs and different orders that would be coming out, and out of which electronic defense products would also be quite substantial. So these are the different advantages that DCX Systems would enjoy, and they would be actually able to capitalize on these opportunities once they have this particular JV. Because offset is, either way they are going to gain benefit, because they have their experience, quality, as well as other benefits. But with the help of another defense JV, with the help of the defense JV, which they would be doing going ahead, that should enable DCX Systems to capitalize on different non-IOP segment defense products as well, which they are kind of constrained a little bit right now, right? So that is where the strategy is, so that they can leverage on those kind of opportunities for this upcoming JV, which is in advanced talks, and should get some clarity in the upcoming quarters.
But again, I mean, none of these numbers are baked in into our models. Just to clarify, because there is no any material development has taken place. Once it happens, yes, then we can bake into those numbers. That is why I would also add one point. If you see our estimates and all, that is why we believe there is much more headroom for that re-rating. We would come to that part because a lot of orders are going to come and their execution capabilities would also, fast forward with all these in-house capabilities or in-house developments that have taken place over last year. ओके सो पोटेंशियल क्या है और आगे कितनी पोटेंशियल नजर आती है इस पर तो बात करेंगे ही मैं हम लोग बस चंद मिनटों में लेकिन जैसे कि दीपक ने बताया इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर ऑन आईओपी एंड नॉन आईओपी और खास तौर से इसके चलते एक्सपेंडिंग कह सकते हैं सेक्टोरल प्रेजेंस का स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सपेंशन या कह सकते हैं कि वहां पर काफी हद तक डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं सो तकनीकें हैं नई सिस्टम्स हैं नए प्रोडक्ट्स हैं नई टेक्नोलॉजी नए इन्वेंशंस हैं और साथ ही इन सब के साथ कह सकते हैं कि एक फुल बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पर नजर आते हैं लेकिन एक आखिरी चीज जो कि इन्वेस्टमेंट रैशनल का हिस्सा रही और इनफैक्ट ये सवाल भी है हमारे एक व्यूअर का और ये है कितने कॉम्पिटिटर्स हैं इसी तरह के सिमिलर बिजनेस लाइन में और डीसीएक्स किस तरह से प्लेस्ड है इन द मार्केट एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर बहुत ही वाजिब सवाल है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट रैशनल का भी हिस्सा रहा कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी सो देखिए करीब 13 से 14 कंपनियां हैं अगर प्योर कंपैरिजन में आप देखेंगे डीसीएक्स सिस्टम्स के एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी या इन सेक्टर से इन क्षेत्र से ताल्लुक रखती हुई जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है साइन डीएलएम है डेटा पैटर्न्स हैं काइंड्स टेक्नोलॉजी अपोलो माइक्रो सिस्टम पारस डिफेंस ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इसके साथ प्योर या कह सकते हैं कि इनकी कंपटीशन लिस्ट में इनके साथ आप जोड़ सकते हैं लेकिन हमारे रैशनल में जो एक अलग चीज पाई गई जब इन सारी की सारी कंपनी के साथ हमने कंपैरिजन किया डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड का तो हमने देखा कि 360 डिग्री सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है देखिए इस कैपेबिलिटी कंपैरिजन को अगर आप देखेंगे डीसीएक्स के साथ उनके पीयर्स की कंपैरिजन को अगर आप देखेंगे पांच क्षेत्र है जिसकी वेबिनार की शुरुआत में भी हमने बात की थी सिस्टम इंटीग्रेशन केबल एंड वायर हार्नेस एमआरओ ईएमएस इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली ये 5 के 5 फीचर्स हैं और जो 13-14 कंपनियां हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो कि कंपैरिजन की जा सकती है डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड के साथ पांचों के पांचों फीचर्स किसी भी कंपनी में नहीं है या पांचों के पांचों सर्विसेज या सॉल्यूशंस कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है सिर्फ डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड है जो कि सिस्टम इंटीग्रेशन केबल एंड वायर हार्नेस एमआरओ ईएमएस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली ये सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रदान करती है और सिर्फ इतना ही नहीं दूसरे स्पेस जैसे कि रेलवे स्पेस में भी एक नया इन्वेंशन करने की कोशिश या न्यू आर्ट सिस्टम के जरिए एक नई पहल की कोशिश कर रही है सो आई थिंक ये आपके सवाल का जवाब होगा कि इस क्षेत्र में जितने भी फंक्शंस मौजूद हैं ये सारे के सारे फंक्शंस को ये सारे के सारे सॉल्यूशंस को केटर करने की कोशिश डीसीएक्स सिस्टम्स कर रही है अपने पेयर्स के कंपैरिजन में सो ये सारे के सारे रैशनल हो गए और अब आगे बढ़ते और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाते हैं एक तो सबसे पहले मैं पहल करना चाहूंगी फिर से सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम आप अपने सवाल पूछे और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे क्विकली Q&A सेक्शन में आपके सवाल पूछे और मैं दीपक आपसे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और आउटलुक ऑफ वैल्यूएशंस के तर्ज पर आपकी रिसर्च क्या कहती है जानना चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग फेज डीसीएक्स सिस्टम्स का क्या नजर आता है Yeah. So, Mansi, just to highlight on this very quickly. So we are estimating in the coming 2 years, DCX should deliver 24% CAGR top line, and the EBITDA margin. Though the management has alluded, they are targeting double-digit margin, but we have been conservative and we have taken by FY26 end 8.5% odd EBITDA margin, and the PAT consequently should expand at a CAGR of 45%. The simple reason is your top line is expanding at a pace of 24% and EBITDA margin expansion is also there. That is aiding to that growth. So if you see our valuation, we have considered 33x or 33 times of FY26 EPS, right? And that is giving us somewhere around 519 as a target price. Just to I think as you said, some of the competition, just to link it with the competitors, and if we look business wise more closely, players like Astro Microwave, Sign DLM, these are very
close competitors. But equally, they are also into R&D, BTS, that is built to specification, which DCX is not there. That is why they have some element of high valuation multiple. But even considering that particular part, if you see 1 year forward, Astra Microwave is nearly trading at 55, 58 times. Cyan DLM is trading in the range of, same the range that they are trading. Astra Micro, your Cyan DLM is trading 1 year forward 48 times. Compared to that, DCX till date after this, rally that we have observed, it is trading at 33 times, 38 times FY25 EPS in terms of PE. So there's a huge discount still in DCX. Simple reason is whatever rally we have seen, I think some of the viewers have posed the question, DCX is trading at 72 times TTM PE. There's a mistake if you are, I think you have taken the data from screener. If you select consolidated, you would see that particular number is not 72 but 65. I think you're looking at standalone basis. That is why the number is looking like that. But it's not the right way to look into the number on historical basis. If we look the forward numbers, because order books have come in and we're estimating 25% odd revenue CAGR for the coming 2 years, EBITDA margin would expand nearly 200 basis points, which is a conservative assumption compared to what the management is guiding. And PCBA as a segment should go to 10 to 12% over a period of time, but we have taken much more lower number from that. And that is why your PAT is still growing over 40% CAGR. And given that 33 times multiple of FY26 is giving us somewhere around 519. Just let me take 1 minute before we move to other questions. Why we think there can be lot of re-rating that should come into the into the particular counter. See, even the narrative around PCBA and all these things are there. In terms of numbers, it is yet to be reflected because DCX Systems did not have the entire year that has gone by to capitalize on the annual advance system, which would be FY25. Once the margins actually start expanding, the JV around your defense comes in, and the PO, that is for NIAT, actually on reality starts flowing in, you'd see different multiple, because at that time, even at the onset, it might not be meaningful revenue for as a overall business in the railway part. But as and when that particular railway business also comes into the picture, you would be assigning different multiple altogether, right? So that is why I'm saying at this point of time, say few months ago, when that order book was not there and little bit concerns around there about the declining order book, we marketed this stock. We reached out to our NPs, time and again. We alluded to the facts why we are thinking this stock is a good one, and the stock just rallied over a span of 2 to 3 days, right? Because something big has happened. And I'm telling, this one single order is one of the many orders that is in the pipeline. You'd see multiple orders, and this is a commentary from the management only in the latest con call. The order pipeline that is there, upon successful conversion, it should take care of couple of years revenue, the top line, right? So even if you consider 2 years, top line, and if they are able to clock in, say, 2,500 to 3,000 crore order book, that is going to be a huge driver, right? So that is why we think there's a significant room left once these things materialize for the re-rating on that stock. So that question is also answered. 72 times, it's not, it's 65, 66 times. And we do not think it's kind of overvalued. If you look at the forward multiple, it is trading at 38 times vis-a-vis its peers, which are trading into to the northern direction of 60, 70. And I think there is another company, Keynes Technologies, is trading in the multiples of 90. Though they are not only into defense, they are into automobile industries. But again, even if you see the peers, they are trading at much more higher multiple. And once DCX has strong order book, PCBAs in-house they built. And another interesting point, all the peers have around greater than 10% commercial revenue coming from PCBA, that is EMS, right? And D6 would have that benefit this year and FY26. So you can understand that ask for free premium valuation would come in from that particular segment also, that particular development taking place, because EMS as a whole or PCBA as a whole is a high margin segment. That is why we think 519, which is another 17-18%. There's a lot of steam left, and as and when the things develop, there would be a lot of headroom for re-rating in this particular counter.
दीपक, अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। एक्चुअली हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके यहाँ पर इन्वॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन वी शुड थैंक आवर व्यूअर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन ऑल्सो, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट इतनी अच्छी शुरुआत से ही नजर आ रही है। और जैसे जैसे हम हमारे पॉइंट्स हाईलाइट करते जा रहे हैं, ठीक उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस विच इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि किस तरह से ऑडियंस इन्वॉल्व है हमारी इस कॉन्वर्जेशन में, नजर आ रही है। आई थिंक हमने मेजोरिटी सारे क्वेश्चंस जो है वो पिक कर लिए। जस्ट वन थिंग विच आई सी इन द Q&A स्पेस इज दीपक, ये काफी जरूरी भी है जानना, इसका जिक्र भी हमने किया था कि रेलवे सिस्टम या नियार्ड सिस्टम जब एब्सोल्युटली डेवलप हो जाएगी फुल फ्लेजेड, सो द परफॉर्मेंस विल बी नेक्स्ट लेवल। सवाल यही है कि मार्केट कैप किस तरह का नजर आएगा रेलवे सिस्टम जब एब्सोल्युटली डेवलप हो जाएगी, और ये सिस्टम को डेवलप होकर या फुल फ्लेजेड इनिशिएट से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक कितना टाइम लग सकता है। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच इज पेंडिंग। बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर टच बेस हो चुके हैं। Yeah, I mean, see, the question that that particular viewer has asked, it's $1 million question, right? So even we have looked out for that particular answer. What would be the revenue that the company would be getting? But let's back calculate and let's look it from that point of view, because there is no particular number specifically given out by the management. But if you understand, if the company is spending 200 crore for a 50% stake in a JV, right? And given the rail, there's a 30,000 crore budget allocation on the railway system upgradation by the government. Okay. And if you see, typically the asset turns for D6 is really, really high. 10 times their asset turns are, right? It is also a reason that one majority of their assets are lying with the vendors. That is why it doesn't come into the books, but the asset turn should be good. So it would be unfair for me to give a particular number, because no particular PO has come in, right? Any particular PO has not come in, but whatever our understanding is, that should be a meaningful number by FY25 and FY26, to be more specific. FY25 we might see certain amount of POs coming in and they're executing it, but anything to be meaningful, say 10% or 15% to around that number, that should go to FY26, as per our understanding right now, because no particular PO has flowed in. But the company has officially announced they are ready for mass production. They are invested 200 crores on this particular company, and that is where a lot of headroom is there for the company to deliver a particular number. But I'm really sorry, there's no point of beating around the bush. I don't have any particular number. That is why it is not there into the model also. If I do that, it would be speculating, right? So let's wait for something material to come in and we can accordingly bake in. And let me tell you, once that number comes in, I mean, the particular counter or the stock would be looked from a different point of view, right? Because though it is a known story, but it is not yet materialized into the business, right? So this is going to be another driver for the entire business going in the future. I think there is another question that has come in on the margin side and ROCE side, right? So as you know, on the margin side, DCX, as we said, this is where the opportunity is. The margin so far has been on a single digit and it is going to be around double digit, right? So FY25, FY24, even if we normalize because of postponement of some of the increased raw material costs that the company is going to come, claim from the customers, that adjusted margin should come around 7%, which was more than 7%, right? Actual reported margin was 5.6. FY25, FY26, we are expecting the margins to be around 8.53%, whereas the management has guided it should be around double digit, that is say 10% or 11%. But we want things to first come in so that accordingly we can upgrade our model. So we don't want to go ahead of the curve and bake in too much positivity, but we believe that is doable because our annual that is the PCBA part is already running. So that is where our margin stands for FY26, and ROC is FY24 is around 10%, FY25, FY26 we expect continuous improvement there, and it should be around 12% in FY25 as per our expectations, and FY26 it should be around 15% as far as the ROCs and EBITDA margins are concerned. And as these things improve, you can easily understand how the multiple re-rating is also becomes a possible case, or rather a probable case, right? Because these are the different levers which are going to drive this. So it's just I think it's a matter of
when, not a matter of if, as far as this successful journey is concerned, if at all, if it has to play out. Yeah. That's a very nice way to put it, Deepak, I would say. And of course, with this, we come to the end of this webinar. लेकिन yes, हमारे इस fundamental research या हमारे पूरे के पूरे fundamental research basket में से इस piece को हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं और आपको बता दें कि D6 systems जो हैं पर्टिकुलरली एक डायनेमिक है जहां पर काफी या कह सकते हैं कि इनके डायनेमिक्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बिकॉज दे आर टेकिंग ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेप्स दे शुड टेक इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन ओरिएंटेड आइडियोलॉजीज और साथ ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड आइडियोलॉजीज कई सारी चीजें इनफैक्ट किसी भी कंपनी के लिए या इस तरह की कंपनी के लिए काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं और इन कॉम्प्लेक्स चीजों को जब आप एक रिपोर्ट में लेकर आए और उस रिपोर्ट को जब आप खास तौर से इस तरह के वेबिनार में समझाएं तो ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल जो नुआंसेस हैं वो समझना काफी हद तक अच्छा या काफी हद तक आसान हो जाता है और इसी सोच के साथ इस तरह के वेबिनार हम लेकर आते हैं जिस तरह से D6 सिस्टम्स कई सारे प्रोडक्ट एडवांसमेंट कर रहा है या एक तरह से यूं कह लीजिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ठीक उसी तरह देवेन चोक्सी और उनकी टीम भी वन स्टॉप सोल्यूशन बनने की कोशिश कर रही है आपके लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में और इसी के चलते इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत नए इनोवेशन नए इन्वेंशंस लगातार हम करने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा इनोवेशन इन्वेंशन हम जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं और लगातार हम इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारे इस इनोवेशन को आप अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे क्योंकि एक्चुअली हमारा एकमात्र लक्ष्य ये है कि हमारे व्यूअर्स हमारे ऑडियंस और हमारे पोटेंशियल क्लाइंट बेस या जो भी कंज्यूमर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट निवेश और साथ ही साथ बाजार की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें एक सोल्यूशन मिलना चाहिए और एक 3 स्टेप प्रोसेस और वन स्टॉप सोल्यूशन के जरिए आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग नीड्स जो हैं वो केटर हो जानी चाहिए और इसी के चलते बड़े इन्वेंशंस लाने की कोशिश और इसी के चलते कई सारी चीजें हैं जो कि बैकएंड पर ठीक जिस तरह से DCX सिस्टम्स के बैकएंड पर हो रही हैं डिया चोक्सी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड भी कई सारी इस तरह के इन्वेंशंस इनोवेशंस और कई सारी थियोरीज लेकर आ रही हैं जिसके बारे में जल्द से जल्द आपको पता चलेगा लेकिन फिलहाल इस वेबिनार को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं सारी के सारी ऑडियंस व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें इस तरह से इंफॉर्मेशन बैक्ड कई सारे वेबिनार्स हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे दीपक इट वाज रियली नाइस टू कंडक्ट अ वेबिनार विथ यू थैंक यू सो मच और यस इट्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट और इस रिपोर्ट को काफी आसान भाषा में समझाने के लिए आपका भी शुक्रिया My pleasure, Mansi, and thank you everyone for joining.